elegantly displaying the national flag and the naval ensign as an aerial salute. आप देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से राष्ट्र ध्वज और नौसेना ध्वज का प्रदर्शन एक वायु सलामी के साथ दे रहे हैं। छोटा आकार बड़ा कमाल, चेतक हर बार। Coming up next are 3 Chetak helicopters from the Angel Squadron, commanded by Commander Alok Raj. This formation includes aircraft from the Eastern, Western and Southern Naval Command units. ये रहे एंजल्स यानी चेतक। Up next are the Dhruv, or the Advanced Light Helicopters, under the command of Captain Saurabh Srivastav in arrow formation, the Kestrels. देवियों और सज्जनों, HAL द्वारा निर्मित यह स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं। आपकी नजरों के सामने एरो फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए ALH ध्रुव। Ladies and gentlemen, get ready to be enthralled by a majestic display of aerial prowess, testament to India's growing maritime might, by 3 multi-role helicopters, the MH-60R. Look ahead, and with a huge round of applause, welcome one of the most advanced anti-submarine warfare helicopters of the world, the arrow formation of Seahawks, led by Captain Siddharth Rana. Now appearing in front of us are 3 Sea King helicopters in arrow formation. The formation is led by Commander Yuvraj, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 350. आसमान से निगाह, समुंदर पर राज, सी किंग का यही है अंदाज। Here comes the Kamov 28 multi-role helicopter piloted by Commander Priyadarshi Paritosh, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 333. डबल रोटर की ताकत, दुश्मन पर घातक, यही है ईगल्स की ताकत। Three Kamov 31 helicopters, the Falcons, are up next, ladies and gentlemen. This arrow formation of Kamov 31 airborne early warning helicopters is led by Captain Venkatesh Kumar, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 339. ऊंचाई से निगरानी, सटीक जानकारी, यही है फाल्कन्स की तैयारी। Ladies and gentlemen, keep a lookout right ahead. Shortly, we'll approach the Dorniers in a diamond formation. Dornier's call sign kites are led by Commander Abhinav Handa, Commanding Officer of Indian Naval Air Squadron 311. भारतीय नौसेना का डॉनियर समुद्र और आसमान में सुरक्षा का एक अटूट प्रहरी है। यह विमान समुद्री क्षेत्र की निगरानी, खोज और बचाव अभियानों तथा तटीय सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। आ रहे हैं सटीक उड़ान का शानदार प्रदर्शन डायमंड फॉर्मेशन में डॉनियर्स। Ladies and gentlemen, look ahead. We can see the 3 Coast Guard Dornier patrol aircraft in an arrow formation, led by Commandant A. Rashim Kalingal. भारतीय तटरक्षक के मैरीटाइम रिकनेंसेस डॉनियर जहाज किसी भी आपदा में सबसे पहले पहुंचते हैं।
तटरक्षक के आदर्श वाक्य वयम रक्षामः को सार्थक करते हुए आ रहे हैं तीराकार फॉर्मेशन में सीजी डॉनियर्स। Approaching shortly is the French Navy's Atlantique II, a long-range maritime patrol and reconnaissance aircraft piloted by Lieutenant Matthew Jeffrey. Today, her presence here reflects the strong maritime partnership between India and France. यह विमान लंबी दूरी तक समुद्र में विमानों और जहाजों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है और इस विमान की उपस्थिति दोनों देशों की नौसेनाओं के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक। Up next is Indian Navy's latest maritime patrol aircraft, the PATI Poseidon from Indian Naval Air Squadron 312, the Sky Lions, commanded by Captain Akshay Raja. These sophisticated platforms are the frontline anti-submarine patrol aircraft in the Indian Navy today. देवी और सज्जनों, पीएटाई के संचालन से भारतीय नौसेना की क्षमता में मजबूती आई है और यह देश की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया है। रफ्तार भी, रेंज भी, पीएटाई है तैयार अभी। Ladies and gentlemen, keep your eyes peeled to the skies lest you miss it. The Hawks will zoom past at speeds in excess of 400 kilometers an hour. Ladies and gentlemen, here come the 7 Hawks in an arrowhead formation, led by Captain V.A. Latif, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 551, the Phantoms. Ladies and gentlemen, keep a lookout for the grand finale, for 5 Black Panthers will approach shortly. And here come the 7 MiG-29K fighter aircraft that operate from Indian naval ship Vikrant, the Black Panthers, led by Captain Abhishek Gawande. Ladies and gentlemen, the flypast may be over, but on our right, we can see again the floating airfield, Indian naval ship Vikrant. INS Vikrant, the nation's first indigenously built aircraft carrier, was named after her illustrious predecessor that served during the 1971 war. The new Vikrant stands as a living symbol of India's march towards complete technological independence. Over 76% of the ship's components, from hull steel and cabling to pumps and valves, are sourced from Indian industries. The design came from the Indian Navy's Warship Design Bureau. India is now among the 6 nations in the world that have the ability to construct both aircraft carriers and nuclear submarines. INS Vikrant is more than just a warship. It is a declaration of India's confidence, skill, and sovereignty. देवियों और सज्जनों, भले ही फ्लाई पास्ट अब समाप्त हो गया हो, लेकिन आपकी दाहिनी ओर भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस विक्रांत आप देख सकते हैं। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत
अपने उस महान पूर्वज जहाज के नाम पर रखा गया है जिसने 1971 के युद्ध में अपनी वीरता सिद्ध की थी और दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। आज का यह नया विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का एक जीवंत प्रतीक है, जो पूर्ण तकनीकी स्वतंत्रता की ओर बढ़ते भारत के कदमों को दर्शाता है। इस जहाज के 76% से भी ज्यादा हिस्से, चाहे वो इसकी बॉडी का स्टील हो, केबलिंग हो, पंप या वाल्व हो, सब कुछ भारतीय उद्योगों से ही लिया गया है। इसकी डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार की है। भारत अब दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पनडुब्बी दोनों का निर्माण करने की क्षमता है। INS विक्रांत महज एक युद्धपोत ही नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास, कौशल और संप्रभुता का एक बुलंद उद्घोष है। Every effort is focused towards indigenization across all domains. The Indian Navy's Atmanirbhar Indian Naval Aviation Roadmap, released during Aero India 2025, captures this spirit of a self-reliant Indian naval aviation by 2047. Going beyond naval platforms, today we are pursuing Atmanirbharta in several critical technologies and niche capabilities like marine propulsion and power generation, artificial intelligence and autonomous platforms, and quantum positioning systems. युद्धपोतों से आगे बढ़कर आज हम कई महत्वपूर्ण तकनीकों और विशेष योग्यताओं में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जैसे मरीन प्रोपल्शन और पावर जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स तथा क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम। If the seas are becoming India's growth engine, technology is undoubtedly its steering mechanism. In this context, the Indian Navy is not just an enabler, but an active contributor to India's national technological capacity. यदि समुद्र भारत की विकास के इंजन बन रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इसका संचालन तंत्र बनती जा रही है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना सिर्फ एक सहायक शक्ति नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय तकनीकी क्षमता में सक्रिय योगदानकर्ता भी है। And now, after having seen warships and aircraft, let us look underwater into the enigmatic world of the sentinels of the deep, the Indian Naval Submarine Arm. They are shrouded by a strange sense of mystery, thanks to their invisibility. Soon, we shall witness a mobile column by these masters of the underwater world. The first submarine in the mobile column today is Indian Naval Submarine Shankul, a Shishumar-class diesel-electric attack submarine. Designed for stealth, endurance, and precision, INS Shankul operates as a frontline SSK. She is commanded by Commander Praveen Kumar Akela. यह पनडुब्बी पोत रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी अभियान और खुफिया जानकारी एकत्र करने सहित विविध प्रकार के अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। INS शंकुल का आदर्श वाक्य है, वयम अद्यम वयम निर्भय, अर्थात हम अजय हैं, हम निर्भय हैं। With humble beginnings in 1967, through the induction of Foxtrot-class submarines, the Indian submarine arm gradually moved on to the Sindhu Ghosh, Shishumar, and Kalvari-class submarines, while also building strategic assets. If warship building could be termed as a complex activity, the degree of complexity only rises manifold when it comes to submarine construction, for it demands the highest standards of quality in workmanship. The next submarine that you see is Indian Naval Submarine Sindhu Kirti, commanded by Commander Ajit Jacob,
a Kilo-class submarine of the Indian Navy, she represents stealth, endurance, and lethal precision. Silent in presence, powerful in action, INS Sindhu Kirti remains a steadfast protector of the nation's seas. सिंधु कीर्ति का क्रेस्ट किलर वेल से प्रेरित है, जो इसके साइलेंट किलर होने की विशेषता को दर्शाता है। अपने नाम को सार्थक करते हुए सिंधु कीर्ति के आदर्श वाक्य हैं बलम शौर्य कीर्ति। देवियों और सज्जनों, फॉक्सट्रॉट श्रेणी की पनडुब्बियों के प्रारंभ से भारतीय पनडुब्बी शाखा ने धीरे धीरे सिंधु घोष, शिशुमार और कल्वेरी श्रेणी की पनडुब्बियों तक अपनी यात्रा तय की। यदि युद्धपोत निर्माण को एक जटिल प्रक्रिया माना जाए, तो पनडुब्बी निर्माण की जटिलता कई गुना अधिक होती है, क्योंकि इसमें कारीगरी और गुणवत्ता के सर्वोच्च मानकों की आवश्यकता होती है। Approaching us is the third submarine of the column and the last vessel to be reviewed by the Honorable President of India today. Indian Naval Submarine Sindhu Kesari. She is commanded by Commander Jijo Mohan. Her name means the Lion of the Ocean, a fitting tribute to her predatory gaze and silent dominance beneath the waves. सिंधु केसरी की एक प्रमुख विशेषता है टॉर्पीडो ट्यूब्स के माध्यम से जल के भीतर रहते हुए सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को दागने की। With that, ladies and gentlemen, we come to the end of the historic International Fleet Review 2026, a memorable day indeed. देवियों और सज्जनों, अब समय आ गया है इस ऐतिहासिक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 से विदा लेने का। आज का दिन हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। वाकई एक बेहद यादगार दिन। On this historic occasion, Admiral Dinesh K. Tripathi, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, will now felicitate Srimati Droupadi Murmu, the Honorable President of India. इस ऐतिहासिक अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौसेना प्रमुख अब भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। In a short while, Srimati Droupadi Murmu, the Honorable President of India, will address the ships and the guests participating in the Fleet Review. कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू फ्लीट रिव्यू में भाग ले रहे जहाजों और अतिथियों को संबोधित करेंगी।
Governor of Jharkhand, Andhra Pradesh, Sri Justice S. Abdul Nazir ji, Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri N. Chandrababu Naidu ji, Union Minister Sri Ram Mohan Naidu ji, Deputy Chief Minister Sri Ponidala Pawan Kalyan ji, Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh and Tripathi ji, the Chief Honorable of the Air Staff, President of Air India, the Chief Supreme Marshal Commander A.P. of Singh ji, Indian Armed Flag Forces, Officer is Commanding addressing in the Chief, officers Eastern Naval Command, and other Vice ranks Admiral of Sanjay INS Balaji, Sumedha, Formal and relatives, officers and sailors of the Indian Navy and friendly foreign navies. Ladies and gentlemen, Namaskar. I feel very happy after witnessing the impressive fleet of warships and the display by naval personnel from India and friendly navies. I express my compliments to each one of you for the professionalism demonstrated by you at this international fleet review. International Fleet Review reflects unity, trust, and respect among nations for maritime traditions. Ships with different flags and sailors from different countries exhibit the spirit of togetherness. The spirit of togetherness is well captured in the theme of this review, United Through Oceans. It is a positive message to the global community that the commitment and result of this collective naval strength can overcome all challenges. India's relationship with the seas has been deep and enduring. For centuries, these oceans have been pathways of commerce, connection, and cultural exchange for India. People enthusiastically celebrate the festival Bali Jatra on voyage of Bali on the banks of Mahanadi in Cuttack during the week starting on Kartik Purnima. This festival is an expression of respect to the ancient sailors from what is now Odisha. It celebrates the tradition of regular sea travel to Southeast Asia for various purposes since the ancient Kalinga Empire. These travels contributed to the spread and exchange of trade and goods, ideas and values, shaping a shared cultural consciousness across region. Visakhapatnam has a glorious maritime past. Today's event underlines the enduring naval significance of Visakhapatnam. This fleet review also takes forward India's vision of Mahasagar, which stands for mutual and historic advancement of security and growth across regions. India's approach to international relations, including the maritime domain, is guided by our ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This approach reflects the wisdom that global security and growth, sustainability and stability are built through partnerships. This spirit of partnership is the bedrock of an enduring global order. Therefore, India believes that a sound maritime order is based on collective responsibility and cooperative action among like-minded partners. Ladies and gentlemen, the Indian Navy is vigilant in safeguarding India's maritime interest and contributing to stability across the wider maritime commons. Units of the Indian Navy deployed in the region serve as credible instrument of deterrence and defense against threats and challenges arising in the seas. The Indian Navy is often the first responder in times of humanitarian crisis and natural disasters, extending quick assistance with compassion and competence. The Indian Navy also plays a vital role in promoting goodwill and building bridges of trust, confidence, and friendship with navies around the globe.
The spirit of friendship on display today through the participation of so many friendly countries highlights the truth that we are connected rather than divided by the seas. On behalf of fellow Indians, I convey warmest feelings of friendship and appreciation to the officers and sailors from friendly foreign navies. You represent the best traditions of your services and your nations. Your discipline, dedication and competence are the foundations upon which collective maritime security is built. Your presence here has further strengthened our bonds of trust and reaffirmed our shared commitment to peace, stability and cooperation at sea. The international convergence on display here will promote our common purpose and heritage. I am sure that all the Navy's representatives here will collectively help the oceans thrive as gateways for growth, prosperity and overall well-being of the global community. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. And the INS Sumedha, which is part of the 4-yacht presidential column today, comprising INS Sumedha, the lead ship, followed by INS Sumitra, INS Savitri and INS Sukanya, who carried guests who had come for the International Fleet Review 2026. Well, welcome back to the studio, and that International Fleet Review was a magnificent maritime display where warships, aircrafts and submarines of Indian Navy as well as the friendly foreign navies came together. They demonstrated the precision, they demonstrated the naval power and they also demonstrated the combat readiness. If you had seen in the fleet, we also saw INS Vikrant and all the special capabilities and all the significance of INS Vikrant was explained in it. Now we bring to you INS Vikrant's AV in a short format. This is my story, the story of India's first indigenous aircraft carrier, the story of my previous birth, the story of my role in the 1971 war, the story of my impending rebirth. I am Vikrant, one of the boldest steps in the nation's dream of Atmanirbhar Bharat. Christened as Hercules, I remained unfinished and half-constructed till India purchased me from Britain in 1957. On 4th March 1961, I was commissioned and placed under the command of then Captain and later Rear Admiral Pritam Singh Mahendru. My motto, Jayem Sam Yudhi Sprada, is taken from Rigveda. It means we win over those who dare to fight. My sons decimated the enemy in the 1971 war as Seahawks and Alizés pounded the enemy targets over Chittagong, Cox's Bazar and Khulna. With my brothers in arms, I prevented reinforcement of Pakistani forces from the sea, leading to the birth of Bangladesh. My sons were awarded 2 Mahavir Chakras and 12 Veer Chakras for their role in the war. I emerged in a new avatar as a V-stall carrier in 1984
with the brand new state-of-the-art aircraft, the Sea Harrier. My new capability inspired the induction of Vikramaditya and the plans for my reincarnation. After serving for 36 years, I bowed out of active service on 31st January 1997. The plans for my construction at Cochin Shipyard Limited were approved by the Cabinet Committee on Security in the year 2002. The commencement of steel cutting in 2005 at CSL was a proud moment for me. My keel was laid in 2009 and I became the first Indian warship whose entire hull was made of steel made in India. I was formally launched on 12th of August 2013 as Vikrant. The new indigenously built aircraft carrier Vikrant goes to sea for the sea trials. I would like to wish her all the very best. I sailed proudly out of Kochi Channel on 4th August 2021, watched by millions of my proud countrymen and women. After a few tentative steps, I soon started gaining speed and became the first Indian warship to achieve full power on the first sea sortie. My chest swelled with pride as I welcomed my birds back on my deck. With their swirling rotors, and proudly heard them call me Mother once again. Soon my deck will reverberate with the roar of jet engines and thump of fighter aircraft taking off and landing on my deck. I am poised to be born again, embodying the spirit of the new India. More than 40,000 jobs were created during my construction. Around 2,000 workers work daily in more than 100 MSMEs. Some of them, in fact, took birth as part of Startup India. Once commissioned, I shall become the Indian naval ship Vikrant once again. I shall be an unparalleled military instrument with my ability to project air power across the Indian Ocean and beyond. I am sure I will be able to inspire our country to construct more of my sisters to help India manifest her destiny as one of the formidable maritime powers of the world. I shall rise again with the ensign on my name, as great ships never die. They are reincarnated. So as we had mentioned earlier that we are also joined by the Additional Director of the Maritime History Society, Commodore M. Dorai Babu. We will also speak about how the ENC has the significance here, how ENC over here is, so we'll directly come to you. We were talking about the Vizag Harbour, we were talking about the natural formation of the harbour. We are also wanting to know about the ENC over here, the presence, how it is convenient for the ENC as well, for Visakhapatnam. Thank you, Shoma, and welcome back all viewers to the studio. The military history of the city is fascinating, to say the least. As I had earlier mentioned, the British were here since about 1765, and thereafter the harbour was modernized in a way in 1933.
A small naval base was then established by the British called Sarkars, taking a cue from the Mughal subdivision of their kingdom. As a formal entity, HMIS Sarkars was commissioned in April 1942, and post-independence, the prefix Her Majesty's Indian Ship was dropped and the unit became INS Sarkars, Indian Naval Ship Sarkars, that continues to be the backbone to ENC. Okay. The city played an important role in World War II, Okay. since it was an assembly point for British convoys, as much as Vizag was a selected target for Japanese attacks and was thus strengthened. Then after independence, the Indian Navy primarily operated from Bombay, that is present-day Mumbai. The India-China War of 1962 happened and quickly followed by the India-Pakistan War of 65. Okay. The Indian militaries had to be modernized and strengthened for the defense of the nation. Right. The 60s was the time when Russian ships and submarines started coming to India. With this, the modern element came for their maintenance and basing, and the naval dockyard was expanded in 1962. And then in 1968, the Eastern Naval Command was formally established in Vizag. In 71, the powerful Eastern Fleet, also known as the Sunrise Fleet, was formed and immediately took part in the 1971 India-Pakistan War and performed brilliantly on the East Coast. But those stories at a different time, since the Eastern Naval Command has moved from power to power and is home to some of the latest and most powerful warships of the Indian Navy. Okay. We were seeing these fleet and the displays, magnificent display. Is there a procedure why these warships, submarines were on display today? What are they showcasing? How are they showcasing India's prowess? So to keep it very short, it is to showcase the might and reach of navies. If a warship can reach a place, it shows others can follow. Okay. Since we have become a builder's navy, we want to show the world our indigenously built ships. Right. Like for example, you have discussed Vikrant, Visakhapatnam, then you have the Delhi class, the new Nilgiri class, the Shivaliks of the ENC. Then we also bring in our latest ships, which have multi-role capabilities like Anvesh, Nistar, the Arnala shallow water ASW ships, and the latest survey ship, Ikshak. And then we showcase some special ships like Tarangini, which is a sail ship, and we have the Madei and Tarini, which have circumnavigated the globe. And since this is a maritime domain event, other maritime forces such as the Coast Guard, the Shipping Corporation of India, research vessels of the government are also showcased. We have the Samarth class pollution control ships. We have Sagar Anveshika from the National Institute of Ocean Technology. We have the Shipping Corporation of India Saraswati, an offshore support vessel. There are also submarines which we saw, our underwater strength, the aircraft of various types, which shows the three-dimensional force that the Indian Navy is. We show our best to the world, and similarly foreign navies send their most capable ships to the IFR. So as you were mentioning these names, Vikrant, Nilgiri, all these have been taken a rebirth, reincarnation. So the name never dies. A name in Navy never dies. What is the story behind this? Well, it's a naval tradition across all navies, followed from centuries, that the name of a ship never fades away. One time or the other, names are repeated. Okay. For example, INS Delhi was always there even pre-independence as HMIS Delhi. Or the later ships, Nilgiri had said our first indigenous warship construction in 76, Udaygiri, Himgiri, and even Vikrant, which we showed. The crest and the name is always carried forward as a legacy. Right. When we are talking about legacy, in the early century, early times, it was India that had the navigational instruments, and then the world took over. World took it and, maybe modified it according to their needs.
What is the legacy behind the navigational instruments that we had at that time? As mentioned earlier, India was a prominent and powerful maritime nation. You become maritime when you cross the oceans, you leave sight of land. So we are getting visuals, we are seeing the visuals where 21 gun salute is happening. We'll go to the jetty.
So we saw today 71 ships, which also included the warships and other vessels over here in this spectacular fleet, and a grand display both from India and the friendly foreign nations. This definitely showcases how the naval powers across the globe have progressed and they've come together. The partnership has strengthened. जिस तरीके से हम आपको पहले भी बता रहे थे कि 71 शिप्स यहाँ पर होंगी, इनके अलावा हमने सबमरीन्स भी देखे, एक एयरक्राफ्ट का बहुत अद्भुत यहाँ पर एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम देखा, शो देखा। ये सारा दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय नौसेना, और ना सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि भारतीय नौसेना अन्य देशों के, मित्र देश के नौसेना के साथ में भी किस तरीके से तालमेल बनाकर एक काम कर सकती है, एक तरीके से वेल कोऑर्डिनेटेड एक प्रोग्राम अंडरटेक कर सकती है। यहाँ पर हमने ये एक अद्भुत नज़ारा देखा, और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये भारत में तीसरी बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है, काफ़ी ग्रैंड स्केल पे हुआ है ये। और जो शिप्स जिस तरीके से यहाँ पर 6 लेन्स में लगी हुई थी, जब शिप INS सुमेधा बीच में से जाती हैं, दोनों तरफ में, दाएं और बाएं तरफ में हमने देखा कि सेरेमोनियल तरीके से, सेरेमोनियल लेन्स कहते हैं इन्हें, उनमें बहुत अच्छी तरीके से इन्हें एंकर किया गया था। और हर शिप छोटी हो या बड़ी हो, वो अपनी जो सिग्निफिकेंस है या अपनी इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने, साथ ही में हमने कमेंट्री में भी सुनी कि वो प्रदर्शित की, और बहुत खूबसूरती से इन्हें एक डेकअप भी किया गया था। ये अपने सेरेमोनियल डेकअप हुए थे ये सारे शिप्स, ना सिर्फ भारतीय नौसेना के शिप्स बल्कि जो विभिन्न अन्य देशों से आए हुए हैं उनके भी अगर आप शिप्स आपने देखे होंगे तो काफ़ी अच्छे उन्हें डेकअप किए गए थे। और ये पूरे सेरेमोनियल इवेंट्स के लिए डेकअप होते हैं और एक तरीके से सम्मान दिया जाता है जो भी देश में वो आ रहे हैं उन्हें। एक ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि अगर भारत का भी कोई यहाँ पर, भारतीय नौसेना की भी कोई शिप अगर जाती है, ऐसे कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो वो भी वैसा ही प्रदर्शन, डेकअप होके प्रदर्शन करते हैं। एक तरह से ये एक दूसरे के देश को सम्मान देने की एक ये प्रक्रिया है। हमने सर से, दोराई बाबू सर से पहले भी बात की थी कि 150 मैन का जो ये सल्यूट होता, 21 गन्स का सल्यूट होता है, या 150 मैन गार्ड जो यहाँ पर होता है, ये भी इसके पीछे बहुत अद्भुत एक हिस्ट्री है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 21 गन सल्यूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब माननीय राष्ट्रपति ऑन बोर्ड जा रही थी INS सुमेधा के, जो कि आज के लिए प्रेसिडेंशियल यॉट थी। उस पर जाते समय माननीय राष्ट्रपति को 21 गन सैल्यूट तो जब कास्ट अवे हुआ तब मिला ही, उसके पहले में माननीय राष्ट्रपति वहां पर आई और उन्होंने 150 मैन गार्ड का भी एक तरीके से निरीक्षण किया। तो काफ़ी ग्रैंड स्केल पर हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लीट रिव्यू हुआ है वो आज हुआ है, संपन्न हुआ है, काफ़ी भव्य स्केल पे संपन्न हुआ है। और जैसे सर पहले भी बता रहे थे कि 19 यहाँ पर वेसल्स आए हुए हैं और कई सारे अन्य देशों के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हैं। तो ना सिर्फ वेसल्स की ओर से, ना सिर्फ वॉरशिप्स के एक तरीके से, बल्कि पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। और जो ह्यूमन पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पर हमने काफ़ी देखा है। यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि जो 70, ये भी देखा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है जो कई दशकों से भारतीय नौसेना के लिए या भारत के लिए एक इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग का काम कर रहा है। और काफ़ी सारे अद्भुत यहाँ पर हम नज़ारे भी देख रहे थे। हमने जाते समय में यहाँ पर पोर्ट का भी नज़ारा देखा जहाँ पर जो मर्चेंट नेवी जो होते हैं, उनके कार्गोज होते हैं, वो सारे भी जो उतरते हैं, बंदरगाह कहते हैं हम वो सारे नज़ारे भी हमने यहाँ पर देखे। अब हम ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जेटी पे से, नेवल जेटी पे से, यहाँ पर हम रुके हुए हैं कि माननीय राष्ट्रपति डीबोर्ड होंगे, ऑन बोर्ड से जो INS सुमेधा है प्रेसिडेंशियल यॉट, वहाँ से उतरेंगी और वो एक बार फिर ये जो 150 मैन गार्ड हैं वहाँ से जाते हुए वेन्यू है जो नेवल जेटी है वहाँ से वो प्रस्थान करेंगी। तो जो तैयारियाँ होती है कि एक बार शिप लग जाए नेवल जेटी पर और उसका
जो उतरने की व्यवस्था होती है वो सारा अभी हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये इवेंट रहा, लार्ज स्केल पर रहा। और 71 शिप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें से काफ़ी सारे ऐसे शिप्स हैं जो कि भारत के जो इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भरता की जब हम बात कर रहे हैं उस पर काफ़ी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है। इसमें से मुख्यतः अगर हम बात करें तो INS विक्रांत के बारे में आपने सुना ही, किस तरीके से उसमें जो इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट है वो काफ़ी बड़ा रहा है। विशाखापट्टनम सिटी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रंट लाइन डिस्प्ले में अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर INS विशाखापट्टनम भी डिस्प्ले पे थी। और विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम जो है वो भी इंडिजिनाइजेशन यानी विशाखापट्टनम क्लास की जो शुरुआत हुई है उसके उसमें इंडिजिनाइजेशन का एक तरीके से फ्लैग बेरर है। और यहाँ भी जो कंटेंट है इंडिजिनाइजेशन का वो काफ़ी बड़ा है। तो जहाँ पे हम बात करते थे कि हम शिप्स ले रहे हैं दूसरे देशों से, खरीदते थे, आज हम अपने शिप्स खुद घर पर बना रहे हैं। बिल्डर्स नेवी हम कहलाते हैं और हम सिर्फ बनाते नहीं हैं, हम बल्कि दूसरे फ्रेंडली नेशंस जो हैं उनको शिप्स देते भी हैं। दूसरे नेवीज जो हैं, दूसरे देश जो हैं वो शिप्स हमसे खरीदते भी हैं और हम फ्रेंडली तौर पर देते भी हैं। तो जो समय था जब हम शिप्स ले रहे थे, खरीद रहे थे, से आज की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता की ओर हम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और बहुत जल्द जो ये इंडिजिनाइजेशन कंटेंट है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ये 75-76% पर है, बहुत जल्द ये जो कंटेंट है, परसेंटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा और हम प्राप्त कर पाएंगे, अचीव भी कर पाएंगे। और इसमें ना सिर्फ हम जो हल की बात कर रहे हैं, कील की बात कर रहे हैं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, वो सारा भी भारत बहुत जल्द अपने आप में बना पाएगा और इस तरफ आत्मनिर्भरता की ओर हम अग्रसर हैं। अब आप देखें तो माननीय राष्ट्रपति INS सुमेधा से बाहर उतर रही हैं।
The Honorable President of India is now departing the naval jetty after reviewing the International Fleet Review 2026. As we mentioned earlier, India is witnessing a historic maritime convergence with 3 major naval events happening here in Visakhapatnam: the International Fleet Review, the Exercise Milan, and also the Indian Ocean Naval Symposium Conclave of Chiefs 2026. The Governor of Andhra Pradesh is also leaving now. As you can see, the dignitaries are coming down from INS Sumedha, which served as the presidential yacht for International Fleet Review 2026.
As he leaves, Justice Abdul Nazir, the Governor of Andhra Pradesh, is having an interaction with CNS. With them is also CNC, Eastern Naval Command. The Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, is also now with the Governor, CNS and CNC. All of them expressing their delight after the International Fleet Review. With that grand review of sails and steel, we now conclude this special broadcast of Doordarshan on the International Fleet Review. Now, as these fleets disperse to their respective shores, they carry with themselves a shared resolve to safeguard sea lanes, strengthen partnerships, and ensure peace and stability in the maritime domain. We also thank M. Dorai Babu, Nausena Medal Gallantry, for joining us offline. He is the Additional Director of Maritime History Society. With that, we thank our viewers for joining us on this special broadcast. Thank you for watching. Namaskar.